everyone, welcome back to my channel. Welcome to Review Monday. Today I'm going to be talking about this very interesting product by the brand Minimalist, the Maleic Bond Repair Complex 0.5% Hair Serum. Yes, quite a mouthful name. Yes, you will know all about this product. So without any further ado, let's get into it. Talking about the packaging of the product, now this product comes into a cardboard packaging which I have thrown long time back, and this is my second bottle. Now the cardboard packaging would give you all the data of the product. This product comes in a very interesting packaging, the main product, the glass bottle packaging, and a dropper style dispenser. Now this bottle also I have used till here already, because I use it when I wash my hair, the day I'm washing my hair. We'll get to that point later. Now this product is going to cost you $4.99 and you pay $4.99 and you get 50 ml of product. And this product is going to last you, if you are going to use it for every single wash of yours, then it's going to last you I think a month. But if you're using only once a week, then it is going to last you a little more longer. Now it is a pre-shampoo serum, so you have to use this product only before shampooing, and that too you can leave this product on your hair for 45 minutes to 1 hour and then straight away wash your hair. Do not leave this product overnight, not recommended. I would not recommend it, and even on the bottle it's written 1 hour. So yes, stick by the time. Now talking about the core ingredients, the core ingredients are maleic acid. It has transglutaminase as well as it has amino acid, which are again formulated with some very interesting ingredients like argan oil, squalane, coconut oil, which all together give you nourishment as well as protect your hair from further damages as well as repair your hair. Now this serum is further infused with vitamin E and carrot root extract, which again improves the overall health of your hair. So all in all, if you see जितनी भी बातें मैंने कही उसमें it is just hair, it's not your scalp. So this product is made for your hair, not for your scalp. So do not put this product on your scalp. I'm telling again and again because you should not put it on your scalp. So in all, what are you going to get from this product and what should you be expecting? It is basically for your overall hair improvement, like the damages, the repair part, as well as further damages. Like further damages क्या होते हैं? हमने कभी भी आयन उठा लिया, बाल स्ट्रेट कर लिए, कर्लिंग कर ली, थोड़ा कलरिंग कर लिया, मतलब हमारे शौक बहुत सारे हैं हेयर स्टाइलिंग करने के, वो सारे शौक हम पूरे कर सकते हैं. बट हमें ये सीरम भी इस्तेमाल करना है जिस दिन हम बाल वॉश करें. उससे क्या होगा कि हमारे बालों को नरिशमेंट मिलेगी और जो हमारे बालों को फर्दर टूटने से और डैमेज होने से प्रोटेक्ट करेगा. So this serum is that serum. Now मैंने ऐसा serum कभी अपनी लाइफ में पहले यूज़ नहीं किया था. I was very skeptical, but this is the second bottle. Now I will definitely share my personal thoughts, so do watch the video till the end. यहाँ तक watch करके खरीद मत लेना, because I have a very different experience with this product. Now this product is dermatologically tested as well as it is free from any kind of silicone, sulfate, mineral oils and paraben. Now how to use this product? Pretty simple. नहाने से पहले, जिस दिन आपको लग रहा है आज मैं अपने बाल वॉश करूँगी, अब मुझे 1 घंटे के बाद नहाना है, जस्ट 1 घंटे के बाद नहाना है, तब ये प्रोडक्ट लो, अपने हाथ पे थोड़ा प्रोडक्ट लो एंड जस्ट पुट इट ऑन द हेयर, not on the scalp. Do not put it on your roots, not recommended. And it clearly says that it is going to work on your length of the hair. So put it, massage की ज़रूरत नहीं है, just put the product and leave it for an hour. Now when you will apply this product, आपको लगेगा कि जैसे वो तेल में ना किसी ने पानी मिक्स कर दिया और वो आपके हाथों को ना थोड़ा एक अजीब सी एक फीलिंग आएगी. Do not get worried, just put it. और थोड़ा ना जब आप लगा रहे होंगे ना प्रोडक्ट, तो आपको लगेगा कि बाल खिंच रहे हैं. Don't over stress your hair with the product. Just प्रोडक्ट को लो, हल्का सा ऐसे करके and just tie it and leave it. Now here comes the biggest thing. What happens now आपने hair wash कर लिया, and the first thing which I used to experience and I still experience is excessively smoothness into my hair. That is something which I definitely experience, but I do not in any way see that shine or glossiness to my hair.
that smoothness, instant smoothness I do feel while washing itself, I would feel, and after drying also I will feel that काफ़ी अच्छी smoothness आ गई है बालों में. Now the day I use the product, उसी दिन मुझे लगता है कि मेरे बाल स्मूथ हैं. जिस हेयर वॉश वाले दिन मैंने ये प्रोडक्ट नहीं यूज़ किया होता है, मुझे लगता है कि मेरे बाल वापस से वैसे ही हैं, ड्राई एंड फ्रिजी. आई एम टेलिंग यू माई करंट स्टेट ऑफ माई हेयर, एंड ये पिछले कुछ महीनों से ही चलता आ रहा है. दैट इज़ वाई मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा आफ्टर वॉचिंग अ रिव्यू. सो मेरे बालों के साथ इट इज़ नॉट सपोर्टिंग और द रिजल्ट्स आर नॉट लॉन्ग लास्टिंग. जबकि नीदर मैं हेयर स्ट्रेटनिंग करती हूँ, ना ही मैं ब्लो ड्राई करती हूँ, ना ही मैं रेगुलर कलरिंग करती हूँ, या मैं हेयर स्टाइलिंग करती हूँ. दिस इज़ माई नॉर्मल हेयर स्टाइल, ये सबको ही पता है अब तक. सो दिस इज़ वॉट समथिंग दिस प्रोडक्ट डज विद मी, कि जिस दिन मैंने लगाया, जिस दिन मैंने वॉश किया, उसी दिन तक उसका रिजल्ट होता है. नेक्स्ट डे भी उसका रिजल्ट नहीं रहता. एज वेल एज द डे आई डोंट यूज़ द प्रोडक्ट, द रिजल्ट इज़ नॉट देयर. फर्दर जिस दिन मैं इसे नहीं लगाती हूँ और मैंने बाल वॉश किया एंड आई कोम माई हेयर, आई डू हैपन टू सी अ लॉट ऑफ ब्रेकेज इन टू माई हेयर. सो दिस प्रोडक्ट वर्क्स ऑन स्पेसिफिक डेज, लाइक इसका मूड है. सो should you be going ahead and buying it? Do I recommend this product? No, because if the result is not long lasting, then why? Secondly, if you still want to use it, you use it, because I do feel this product will work with different set of hairs. Maybe it's not made for me. So I would not say the product is bad, because जिस दिन लगाती हूँ उस दिन तो अच्छा रिजल्ट दे रहा है मुझे. But apart from smoothness, it does not give me anything. For $4.99, I do feel you should try it once. If you still don't like it, don't continue using. तो मैंने इस दोबारा क्यों दूसरी बॉटल खरीदी? Because I still wanted that one day smoothness into my hair. So that is why I was using it. But I feel अब मैं इसको यहीं पे यूज़ करके ख़त्म करके I will not repurchase this product. एंड ये प्रोडक्ट मैं ऑलरेडी इतना यूज़ कर चुकी हूँ, सो इतना ही बचा है. आई विल फिनिश इट. ये प्रोडक्ट ईजिली आपका अगर आप हर वॉश पे लगाते हो तो 1 से 1.5 महीना लगेगा. बट आई वुड हाईली रिकमेंड, डू नॉट यूज़ दिस प्रोडक्ट मोर देन ट्वाइस. वंस भी यूज़ करोगे दैट इज़ मोर देन इनफ. बट मेरे साथ थोड़ा केस अलग था, तो आई वॉज यूजिंग ट्वाइस अ वीक, एंड ऑन द बॉटल ऑल्सो इट इज़ रिटन यू कैन यूज़ इट ट्वाइस अ वीक, बट नॉट मोर देन दैट. इट मे स्टार्ट डैमेजिंग योर हेयर, सो डू नॉट ओवर डू योर हेयर विद दिस प्रोडक्ट. All in all, a product which Minimalist has made very nicely, but I would say it is not made for everyone. It has to be tested, tried, and then you can give like a thumbs up, yes, this works. Yes, so it is not working the way I wanted it to be, but I will still leave the link in my description if you are interested, but I would not be repurchasing this product again. I hope this review helps you in some way and to decide should you be buying this product any further. But these were my personal thoughts and what I basically felt with the product. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो गिव इट थम्स अप. अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड फॉलो मी ऑन माई Instagram @branzinggeek. I will see you in my next video. Till then, you take care and ta-da!